Internal rate of return or IRR method. This is part 1. This is our 178th module of financial management, in which we will discuss that what IRR is and what is the significance, and then later on we'll see how it is calculated. So far in the previous modules, we have talked about the discounted cash flow methods, that what these actually are, where we have said that every discounted cash flow method requires calculation of present values of cash flows. So first we determine the cash flows that will be generated by a project, and then we calculate the present values of those cash flows, and that is why we call them the discounted cash flow methods. Before the discussion of IRR, we have talked about the net present value method, we have talked about profitability index, and we have also discussed the payback period method. IRR is a method which actually may be called as a relative method of making a decision about a project. ये relative और absolute क्या होता है और इसको हम कैसे distinguish करते हैं? मैं इसके लिए इसको net present value method के साथ compare करना चाहूँगा. IRR method is a method in which we get a certain rate of return which is in percentage. That is, we'll get, for example, the answer or the result as 12% or 15% or 23%. Now, a percentage is not an absolute amount. If I calculate 10% of 1000, it is 100 rupees. But 5% of 20,000 rupees is more than 100. So which means that a lower percentage may give me a bigger value if multiplied by an amount which is greater than the first value. तो percentage हमें एक relative information देती है, हमें absolute dollar या rupee value में answer नहीं देती. Net present value is the only method that gives us the results in the form of absolute dollar terms. IRR is one method that gives us the results in the form of percentage. IRR हमें क्या बताता है? IRR हमें ये बताता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट का जिसमें हम इन्वेस्ट करने के बारे में फैसला करना चाहते हैं, कितने % रिटर्न ये प्रोजेक्ट हमें जनरेट करके देगा. So when we apply this method, internal rate of return method, we get a result, let's say 23%. Now what we do is that we compare this IRR with our required rate of return. Required rate of return की भी हम डिस्कशन बहुत दफ़ा कर चुके हैं, यानी ये वही रेट ऑफ रिटर्न है जो हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त किसी प्रोजेक्ट से अर्न करना चाहते हैं. और ये भी हमने बात पहले की है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इन्वेस्टर के लिए required rate of return same हो. There is a possibility that two investors may have got different requirements for earnings from a project. And this is because of the opportunity cost of funds. अगर मेरे पास एक investment opportunity है which is more than 23%, so I would use a higher rate. And if others do not have that opportunity, so they would probably be happy with a lower rate of return. Technically speaking, what IRR is with reference to the cash flows, as I've said, again we have to determine the present values of all the cash flows, inflows and outflows. And then we have to see that the rate of return which actually equates, जो बराबर कर देता है किन दो चीज़ों को,
सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज को और आउटफ्लोज को। यानी अगर हम कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इक्वेशन के एक तरफ रखें और इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को निकाल के दूसरी तरफ रखें, तो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। जिस रेट ऑफ रिटर्न के लिए इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाती हैं, उस रेट ऑफ रिटर्न को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का नाम देते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यानी ये रेट हमें कैसे मालूम होगा कि जिस रेट ऑफ रिटर्न के लिए प्रेजेंट वैल्यूज इनफ्लोज की और आउटफ्लोज की बराबर हो जाएंगी। तो इसका आंसर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अनसाइंटिफिक है, किसी हद तक हम ये कह सकते हैं, बिकॉज द मेथड दैट वी यूज फॉर इट is called a hit and trial method. This hit and trial method means, if we have a look at our screen, that we apply different rates of return one after the other and try to calculate the present values of the cash flow stream. यानी हम एक के बाद दूसरा रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करते जाते हैं और कैश फ्लो स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू निकालते चले जाते हैं और देखते हैं कि किस रेट ऑफ रिटर्न पर जाकर आउटफ्लोज और इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक लेबोरियस जॉब है, हमें कई मरतबा प्रेजेंट वैल्यूज निकालना होती हैं। और व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट विल बी द एंडिंग पॉइंट, इट इज़ नॉट दैट लेंथी इन प्रैक्टिस। यानी अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें कुछ आइडिया बहरहाल होता है कि तकरीबन कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें यहाँ से मिलेगा। फॉर एग्जांपल, if we are getting 18% rate of return from the stock market or from the real estate market, we can get like 21%. And in the business in which we are going, generally it is generating, let's say, 25%. So 25% then becomes the benchmark और हम उसके करीब करीब अपनी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कैलकुलेट करके देखते हैं। So we look at the slide, we will see that it is showing us an NPV profile. This NPV profile is that with a lower rate of return, अगर हम इसको x एक्सिस के ऊपर देखें तो हमारे पास ये डिस्काउंटिंग रेट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो y एक्सिस पे हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे को जा रहा है। सो विच मीन्स that higher is the discounting rate, lesser is the net present value, and then we see that there is a point which is like 20% के जहाँ पर हमारे पास net present value ज़ीरो हो जाती है। So यही वो rate of return है, exact rate of return है जो project हमें earn करके दे रहा है। This is that rate of return where the sum of present values of inflows will be equal to the sum of present values of outflows. So हम इस मॉड्यूल को इस तरीके से ख़त्म करते हैं इस बात के ऊपर कि IRR एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है जिसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यूज डिटरमिन करते हैं और प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज और आउटफ्लोज को बराबर करने की कोशिश करते हैं और एक ऐसा रेट डिटरमिन करते हैं जिस पे ये दोनों बराबर हो जाएं। इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, यानी एक के बाद दूसरा रेट अप्लाई करते जाते हैं यहाँ तक कि हम उस रेट तक पहुँच जाते हैं जिस पर ये दोनों बराबर हो जाए। सो ये जो NPV प्रोफाइल है ये हमें ये बताता है कि कैसे हम रेट को बढ़ाने से अपने IRR की तरफ मूव करते चले जाते हैं। हम अगले मॉड्यूल में IRR की कैलकुलेशंस पे बात करेंगे और देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है।